No, I have very peculiar answer for this. See, let us not compare the two people. I don't want to blame or talk anything against the earlier chairperson also, because she's a respected person in the country. Earlier, she didn't even attend board meetings or for a year together, you know. So let us not get into that. Our contention is that we as filmmakers, we came on the board with a kind of a vision, with a kind of a thing that we should, because we know where it pinches being in the industry. We know how the producer suffers. We know how the director suffers. We know how a maker it feels when he goes to the censor board. So, getting out of all those things, how do we go out with keeping those things in mind? In fact, all three of us were very excited and are still excited. And that is what we want to be. Our dream is all together in the entire board, including the government of government of India. How do we take the cinema, the future of Indian cinema, which is competing with the world cinema, to a level where the maker doesn't have to undergo a kind of a problem, which is whether psychic or whatever it is. And he was so progressive, and he was so positive about it, that we thought these issues will be solved within 2-3 months time, and you will see a altogether different feel and the color of the board, and we are very positive about it. So let us end the entire thing on a positive note, and let us all together see to it. That's what we all sat together and we discussed. Let us take the film industry on to a level where we can make good films and release good films in the world. But what would happen to the clash of opinions that's happening between the chairman and the other members of the board? Whatever is called the clash of opinion, when there are so many people come together to form a board, there are going to be difference of opinion, and it was blown out of proportion according to us. There was no clash of opinions. There were difference of opinions. There will be tomorrow, after a few years, there will be difference of opinion. As the time changes, society progresses, different opinions will come forth. But board as a whole have a direction. Direction is progress, friendliness, and our honorable chairman is part of it. Our honorable chairman is still going to guide us through it. So I don't see any reason to take it as a agenda on somebody's part or some kind of revolution taking place. No such thing. This is just an evolution that is taking place, and it has to, and it will in its own course. I think in fact the credit should go to us that we have believed in democracy. We have voiced our opinions in a very free way, which never happened. This is the first time. I think that should be the credit should be given to us for that also. And there are reports that Mr. Nalani will be replaced. No, sir. We cannot react to that. No, sir. Yeah. कहा जाता है कि जब फिल्म मेकर चेयरमैन बनेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी, और आप लोग भी आए तो लग रहा था कि चीज सुधर, यहाँ तो और घमासान शुरू हो गया। सुमित, मैं तुम्हें विश्वास दे रहा हूँ, ये घमासान ही सुधरने की निशानी है। ये रिकंसाइलेशन जैसे मैंने कहा, ये रिकंसाइलेशन की पहली शुरुआत है, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री और सेंसर बोर्ड अब एक यूनिट होकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज व्हाट डू यू से? सर, राज्यवर्धन जी ने कहा पूरी जो सारी चर्चा हो रही है, मैं हैरान हूँ कि वो बोर्ड वर्सेस चेयरमैन, हम चेयरमैन को अलग नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, जो मैंने शुरू में ही कहा कि आज की पूरी चर्चा का विषय पास्ट नहीं है, एक दिन पहले की घटना नहीं है। चूँकि श्री राज्यवर्धन जी इत्तेफाक से मुंबई में थे, हमने इसके भविष्य की चर्चा की कि हमारे अभिप्राय भविष्य को लेकर क्या है, किस प्रकार के परिवर्तन हम बोर्ड के भीतर, CBFC की ऑफिस के भीतर हम देखना चाहते हैं, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। इसलिए जो बार बार ये जो प्रश्न उठ रहा है कि चेयरमैन और मेंबर्स, क्या उनके बीच में कोई घमासान है, तो उत्तर है नहीं। जैसा मिहिर ने कहा, वे हमारे लीडर हैं, वे हमारे नेता हैं। भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ। मुझे उनकी लीडरशिप में विश्वास है, हम उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और मैं मानता हूँ कि वे भी बोर्ड के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो इससे बात की बहुत अच्छी बात है आपकी। बस एक अंतिम इसमें पूछ रहा था आपसे कि क्या उनका हटने की कोई संभावना है, या ऐसा कोई उन्होंने कुछ कहा? ऐसी कोई बात आज नहीं हुई। आज हम लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जिसे प्रोफेनिटीज या असभ्य शब्द कहते हैं, उस पर भी हमने आज कोई चर्चा नहीं की।
what are the changes you are looking at? आज हमने यही सारी बातें की, जो बड़ी विस्तार से बातें की। तो सर अगर आप डेढ़ हमें भी बता घंटा देंगे ये बात थोड़ी विस्तार से तो हम- नहीं, इसलिए ये- वो एक शब्द इस्तेमाल हमने किया था कि फ्रेंडलीनेस। जब निर्माता आए या निर्देशक आए तो वो हंसते हुए आए और हंसते हुए जाए और अपने साथ एक नया अनुभव लेकर जाए। और ये कोई समस्या, नई समस्या नहीं है, ये परंपरा के कारण कई लंबी समस्याएं रही हैं। और चूंकि शायद हम सभी अधिकतर बोर्ड जो मेंबर हैं वो फिल्म मेकर रहे हैं, इसलिए हम सब ने अपने अनुभव की बात की। मैंने अपने अनुभव की बात की कि फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए किस किस तरह की परेशानियों से एक निर्माता या निर्देशक गुजरता है। मैंने नवंबर में देखी थी वो सारी परेशानियाँ, वो हम लोगों ने राज्यवर्धन जी के साथ शेयर की, अशोक जी ने अपनी की, मेहर जी ने अपनी की। शायद ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर था कि फिल्म मेकर के, आज आप यदि मुझसे पूछें तो आज मैंने बोर्ड मेंबर के नाते बातें कम की हैं और फिल्म मेकर के नाते ज़्यादा बातें की हैं। और फिल्म मेकर की क्या परेशानियाँ हैं वो उनसे बता। Then should we say that the UA certification and the A certification will now be a thing of the past, and PG 13 and 12 these certifications will now start He is working towards it. मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पर लंबे समय से चर्चा CBFC के भीतर चल रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि नया बोर्ड आया इसलिए परिवर्तन आया है। सरकार भी उसके बारे में सोच रही थी, पुराने समय के जो अधिकारी थे वो भी इस पर सोच रहे थे। इस पर आज भी उन्होंने बात की है और इस पर आप बहुत जल्दी सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे, ऐसा मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। राज्यवर्धन जी ने अभी कहा पारदर्शिता लाने की बात जी। तो ये ऑनलाइन किया जाएगा। जी। थोड़ा सा उसके बारे में अगर कुछ बताएं तो। इस समय हम लोग उसके बारे में इसलिए नहीं करेंगे, तो एक विचार हम लोग के बीच में लंबे समय से था कि अक्सर निर्माताओं को लंबी कतार लगानी पड़ती है। एक इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है कि निर्माता को CBFC के कार्यालय में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिसको मॉडर्नाइजेशन की बात कह रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। You can sit at home and you can appear, you can और आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ तक पहुँचे, कब आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है। तो ये सब अच्छी बात जो टाउट्स और जो ब्रोकर्स की पूरी जो होगी वो सब बाहर हो जाएगी and one to one everything will be very transparent. Agencies will be hired, who can outsourced agencies who can really work out your entire system the way passports are being now worked out and all that. तो एक जो broader तरीका है खुलने की जो बात है कि ताकि लोगों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए चीजें आसान हो जाए, वो उनके अंदर जो डर है, जो भय है, उसको कैसे निकाला जाए और एक फैमिली की तरह दोनों किस तरह से ऑपरेट करें। आई थिंक दैट वाज द मेन point of discussion with the minister, and we all were quite excited and quite happy after meeting him, because he said go ahead, let us proceed further. The officers were sitting with him and he said let us sit and start working on point by point and see to it that the industry feels happy in making films. Ultimately it's the country which is seen through cinema, so why keep them in the dark. एनी प्लान्स की प्रोड्यूसर जैसे कल मिले थे राज्यवर्धन सिंह जी और आप लोग सब एक साथ बैठ के पूरा एक मीटिंग करें? अरे सुमित, जब मैं बोलता हूँ तो सुनता नहीं है, मैं बोल चुका हूँ, इसका जवाब भी दे चुका हूँ मैं। मेरी बात सुनो, ये डिसाइड कर चुके हैं कि जनरल मीटिंग लगातार अभी होती रहेंगी इंडस्ट्री की और CBFC की लगातार। हम हर महीने 2 महीने में एक मीटिंग करते रहेंगे ताकि चीजें जो हैं वो क्लियर हो एक दूसरे के बीच में, ताकि वो गैप नहीं रहे और उससे सही चीजें निकलेंगी। उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, डिस्कशन में ही चीजें निकलती है ना बात। So you say the picture is positive now, but there was the cost list controversy, then there was the NH10 controversy, then sir, your letter to the board members got leaked. You are again talking about the past. No, that is what made us So let us talk about the future. within the board. So are you saying that the clash will be resolved now? That everything there, you're working as a cohesive team now? We all said that. Whenever we said that. What was the purpose of my letter to the board? That let's meet. So finally we are meeting. But isn't the complete board in place today? Yes, because a lot of people, since we gave a very short notice, and incidentally minister was here in the Mumbai, it was not decided. So soon the board is going to meet. It was not an official meeting. ठीक है, सर आपको पोस्ट करना पड़ेगा खड़े होकर तीनों को एक साथ। हम कर देंगे पोस्ट। मेडल बनाएगा। आजा। एक्टर नहीं हम लोग। मैं तो आई एम रेडी। तीनों एक साथ आओ। मैं आप भी एक्टिंग कर चुके हैं, मैं भी एक्टिंग कर चुका हूं। हमारी किसी भी बात को अधिकृत न माना जाए, है ना? इट इज अनऑफिशियल मीटिंग, अनधिकृत है, अधिकृत नहीं है, गड़बड़ मत करो, है ना?
ओके बहुत बहुत धन्यवाद। इधर में फिल्म सुमित तो मतलब अभी रजत जी से बात करनी पड़ेगी। देखिए मस्ती कर बात कर रहे हैं तो सुमित तू फिल्म बनाना शुरू कर दे। तू तेरे को स्क्रिप्ट देता हूँ तो डायरेक्ट शुरू कर दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सुमित।